This is the greatest risk of a huge tragedy. This is the most likely thing by far to kill over 10 million excess people in a year. दोस्तों, बिल गेट्स का ये मानना है कि जो कमिंग डिजीज है उनसे 30 मिलियन लोगों की जान जा सकती है, वो भी केवल 6 महीने के अंदर। और उनका ये मानना है कि इंसान अभी इसके लिए तैयार भी नहीं है। तो बिल गेट्स ऐसा क्यों मानते हैं, क्या है उसके पीछे के उनके लॉजिक, जानने के लिए देखते रहिए साइंस टॉक का ये एपिसोड हिमांशु इंडिया के साथ शॉर्ट इंडिया चैनल पर। दोस्तों, बिल गेट्स इस पिछले फ्राइडे में एक डिस्कशन में मौजूद थे जिसको होस्ट किया था मैसाचुसेट मेडिकल सोसाइटी के साथ साथ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने। उसमें बिल गेट्स ने ये कहा कि वन थिंग वी नो फ्रॉम हिस्ट्री इट्स दैट अ डेडली न्यू डिजीज विल अराइज and spread around the globe that could happen easily within the next decade. He also said that there is one area the ways the world is not making any progress, and that's pandemic preparedness. Further, he said, in the case of biological threats, the sense of urgency is lacking and the world needs to prepare for pandemics in the same serious way it prepares for war. तो बिल गेट्स का यह मानना है कि हम लोग जो जैसे कि अभी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट कम होता जा रहा है और नई नई जो बीमारियां आती चली जा रही हैं, उनसे ह्यूमन की लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि उनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो बिल गेट्स का मानना है कि हमको प्रिपेयर होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, उनको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इनको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए इन रिसर्च में और नई नई डिजीज की मेडिसिन को डेवलप करने में, जिससे इस आने वाले खतरे को रोका जा सके। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स ने एक और इंटरव्यू में आज से कई साल पहले भी ऐसा ही कहा था कि हमें वर्ल्ड वॉर होने से इतना खतरा नहीं है, किसी भी वॉर होने से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमें जो ये पेंडेमिक डिजीजेस होती हैं उनसे है, जो एकदम से शुरू होती हैं और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन लीला समाप्त कर देती है। दोस्तों, बिल गेट्स ने क्या कहा था उस पिछले इंटरव्यू में, उसके कुछ अंश हम आपको दिखा दे रहे हैं। लेटेस्ट इंटरव्यू की वीडियो हमारे पास नहीं है, मगर उस इंटरव्यू का लिंक हमारे पास है जो हमें मिला है sciencealert.com वेबसाइट से। तो उस वेबसाइट का और उस इंटरव्यू का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर बिल गेट्स ने और क्या कहा है इसके बारे में आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। There's two kinds of flus. There's flus that spread between humans very effectively, and there's flus that kill lots of people. And those two properties have only been combined into a widespread flu once in history. Well, that is Spanish flu. We have no idea where it came from. It's called the Spanish flu because the Spanish press was the freest. They were the first to talk openly about it. And so in the annals of epidemic history, that's the big event. Compared to 1918, it's over 50 times as great. And so if you get something like the flu, and you look at that map of how within days, it's basically in all urban centers of the entire globe, that is very eye-opening. That didn't happen with Spanish flu in the past. And the Ebola epidemic showed me that we're not ready for a serious epidemic. An epidemic that would be more infectious and would spread faster than Ebola did. This is the greatest risk of a huge tragedy. This is the most likely thing by far to kill over 10 million excess people in a year. We don't need to invest nearly what we do in military preparedness. This is something where less than $1 billion a year on R&D, medical surveillance, standby personnel, cross-training the military so they can play a role in terms of all the logistics here. This can be done, and we may not get many more warnings like this one to say, okay, it's a pretty modest investment to avoid something that really, in terms of the human condition, would be a gigantic setback. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल शॉर्ट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहेगी कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहे जिंदाबाद रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।